हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपनकर जीएस एजुकेटर प्रभु मीर गुड इवनिंग देवाशीष गुड इवनिंग तो होप आपण माने समस्त बहुत बेटर अछंती जो माने ओएमसी देइथिले तांकर आंसर शीट मध्ये आसी पहुंची गलानी तो होप आपण माने बहुत बेटर करथिबे के कोन केमती कोन स्कोर करचंदी मो पाखरे हाईएस्ट आसी 113 जणे रखिचंती नाम कहबिनी जानी परिबे आपण माने 113 हाई स्कोर करचंदी आदित्य नमस्कार आदित्य केते रहिला ओएमसी देइतलो ना जो माने ओएमसी देइतलो केते कोन करचो शताब्दी गुड इवनिंग शताब्दी केमती को हला ओएमसी एग्जाम तो from today onwards we are going to discuss about your modern Indian history which is a part of your Tamil Nadu textbook series very important for your upcoming examinations not only for your OPSC but also for the other competitive examinations very important very important for your upcoming examination Shatabdi 92 only Samir 96.76 अरे only no 92 is a very good score hope you will get the selection issue good evening जय जगन्नाथ to all of you तो देखंतु आज टू मु जोटा पढेबी the series will be on English Hindi Odia तो गोटे complete series हबो because so many students are there which have problem and Odia also एमती भी हम पाखरे पिला छन जागोटे ओडिया को भी नहीं प्रॉब्लम होची so we'll discuss in bilingual English Odia and मजरे मजरे हिंदी भी थोड़ा बोल दूंगा ठीक है तो आज रो मोटिवेशनल कोट very important to all of you you have to be fight some of the bad days तो आज रो तमर होची आदित्य नेटवर्क इशू ओके some the bad days जेमती शताब्दी कहिले 92 only ठीक अछि तम पे एटा आज बैड डे तमे एमती किछि बैड डे को अर्न कर to earn some of the best days in your life तो किछि बेस्ट डेज तमर आसीबो 92 only न कि आउरी हमें प्रिपरेशन करिबा जदी हमें डेफिनेटली बहुत बेटर करि परिबा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन तो जो माने भी ओएमसी देइचंती 90 एव बहुत बढ़िया अटेम्प्ट बट मु कहूची तमर सिलेक्शन हेई पारे 90 95 प्लस पिला 100 प्लस भी मु देखिलेनी जणे पिला भी मते कहि सलेनी 113 या 111 कहउचंदी से सो very good attempt to Samir Shatabdi all of you so let us start first lesson under regulating act of 1773 and 1784 which is also known as the Pitt's India Act. Pitt was the former prime minister and the prime minister of England at that time in 1784. We'll discuss in a very particular manner आउ एते बढ़िया मैनर डिस्कशन करिबा कि तमे आजी पूरा कंप्लीट बुझी कि जीवो मु गारंटी दउची से गारंटी मु नउची कि तमे आजी कंप्लीट हिस्ट्री बुझी कि जीवो आउ एते बढ़िया हिस्ट्री केबे मजारे पढी भी नथिबो तो फर्स्ट एटा हमें जानि दबा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे एस्टैब्लिश हेतला 31 डिसेंबर 1600 आज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन एलिजाबेथ 1 तो 1600 मसिया डिसेंबर 31 तारीख दिन ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हेतला द कंपनी हैड सेंट कैप्टन हॉकिंग्स सो दिस नेम इज मस्ट टू रिमेंबर कैप्टन हॉकिंग्स टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर इन 1608 टू सिक्योर ए परमिशन टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री इन एट सूरत तो ए जो कैप्टन हॉकिंग्स ये आस्तेले के जहांगीर किए थिले मुगल एम्पायर एटा भी समस्त जानी चंती टू सिक्योर ए परमिशन एंड टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री हाउएवर इन 1613 जहांगीर इशूड ए फरमान तो एटा किछि नै एठी तमरा जेतिकी मु अंडरलाइन करूची पीडीएफ देई देबी सेतिकी टिके खाली पढी दबो मेन आज हमें डिस्कशन करिबा regulating acts of Pitt India acts of Warren Hastings को कार्यकाल 3 are the most important things which we are going to discuss today
तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एटी टिके मन रख दबो इंग्लिश कोटी कोटी से माने बिजनेस सेक्टर को एस्टैब्लिश कले आगरा अहमदाबाद ब्रोच तो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट in 1639 Francis Day established the city of Madras and constructed Fort St George तो तमरा तीनटा प्रेसिडेंट इतला गोटे माड्रास गोटे बॉम्बे आ गोटे कलकत्ता फोर्ट एसटी जॉर्ज कोटी तमरा थिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माद्रास मन रखिबो माद्रास वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा की एस्टैब्लिश करथले फ्रांसिस डे तो फ्रांसिस डे आपको एस्टैब्लिश करिथिले तापरे तांकर से रेंट ऊपर एटा टिके देखि दबो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आसुची विक्रम वॉइस टिके क्लियर आसुनी एबे ठीक अछि विक्रम मेन इंपोर्टेंट होची बैटल ऑफ प्लासी ऑफ 1757 बैटल ऑफ बक्सार ऑफ 1764 these are the very very important एठी गोटे पॉइंट मन रखिबो रॉबर्ट क्लाइव थिले फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम under the company rule he was succeeded by the एटा किछि मन रखिबा दरकार नै in 1772 company appointed Warren Hastings as governor of Fort William the Fort William रा जो रॉबर्ट क्लाइव थिले तो एबे सुधा हमें केतरा नाम मन रखिबा गोटे कैप्टन हॉकिंस गोटे होचन सर थॉमस रो थर्ड होचन फ्रांसिस डे फोर्थ होचन रॉबर्ट क्लाइव फिफ्थ होचन वारेन हास्टिंग्स सो एतिके को तमे टिके खातारे नोट करि दियो these are the very very names which may come in your upcoming examinations तो रिफॉर्म कोन हैला रिफॉर्म कले वारेन हास्टिंग काहे कि बिकॉज़ वारेन हास्टिंग जेते बेले पोजीशन संभाली थिले सेते बेले कंपनी रो फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो फाइनेंशियल कंडीशन गोटे chaos एवं गोटे वर्स्ट टाइम देखि गति करथला बुझी पारुछ ना नहीं तो वारेन हास्टिंग को केतरा रिफॉर्म्स करिया पई के आसिला कोन एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम तो डुअल सिस्टम कोन व्हाट इज द एबोलिशन ऑफ द डुअल सिस्टम द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड एक्ट एज दीवान एंड अंडरटेक द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू बाय इट्स ओन एजेंट तो ये कोन कले वारेन हास्टिंग कहले कि आमे एबेठू जो रेवेन्यू कलेक्शन करिबा फ्रॉम द इंडियंस इट विल बी कलेक्टेड बाय आवर ओन एजेंट्स not by the third party not by the other ones hence the dual system introduced by the Robert Clive was abolished so my first question to you my first question was who introduced dual system answer is Robert Clive who was the former governor of Fort William introduced the dual system the dual system hela Robert Clive introduce करिथिले ताको abolition किए कले वारेन हास्टिंग as a measure तो सही कहला वारेन हास्टिंग तापरे जो नवाब को अलाउंस दिया होतला 32 lakhs of rupees ताको रिड्यूस कले हाफ माने 16 lakhs को आउ जो मुगल मान को एड दिया होतला 26 lakhs रो ताको मध्ये बंद कले बिकॉज़ कंपनी रो सिचुएशन वाज हॉरिबल एट दैट टाइम समस्त को गुड इवनिंग रेवेन्यू रे भी तमरो तीनटा को से करथिले गोटे हला तमरो जो एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम सेकंड पॉइंट होची रेवेन्यू रिफॉर्म थर्ड होची तमरो जुडिशियल रिफॉर्म तो रेवेन्यू रिफॉर्म रे कोन हेतला से गोटे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश करथिले कलकत्ता रे जार काम कोनथला सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इंग्लिश कलेक्टर वाज अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट तो कलेक्टर से तबले अपॉइंटेड होतले ट्रेजरी को रिमूव करा गला फ्रॉम मुर्शिदाबाद कलकत्ता मुर्शिदाबाद रो कलकत्ता को आ जने अकाउंटेंट जनरल ए जो रेवेन्यू रो देखा रखा करिया पई जने अकाउंटेंट जनरल को अपॉइंटमेंट करा गला कलकत्ता does become the capital of Bengal in 1772 very very important question Calcutta become the capital of Bengal in 1772 because its treasury was shifted from Murshidabad to Calcutta and shortly after the British India तो एथरे कोन हला द बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ऑक्शंस 5 ईयर को तांकर जो इंस्टेट करा गला जमीदार मानन को एट तांकर देखिबो तापर हला जुडिशियल सिस्टम रे भी वारेन हास्टिंग कर अवदान बहुत थिला से कोन कले ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे सिविल कोर्ट को एस्टैब्लिश कले से सिविल कोर्ट को देखारेख करिया पई इंडियन जज को मधे एस्टैब्लिश करा गला सेइठु तमर बाहरला दी प्रकार कोर्ट टू अपीलेट कोर्ट जोटा कि हमें जानि छी देवानी अदालत आ उटे होची कोन फौजदारी अदालत
one is for civil case and another is for criminal case गोटे होची जमी बाड़ी कागज पत्र गोटे होची तमरा मारधर जोहणा कटा होचंदी was established in the Calcutta तो एटा को तांकर से गोटे रिफॉर्म देइतले because the Britishers was not believe on the judicial system of the Indians so these are the very important question तो वर्तमान आमे जिबा the regulating act 1777 these are not to be discussed we will discuss from this so what is 1773 regulating act very important for your upcoming examination एठी बुझ मेन पाठ हमर एठू स्टार्ट हला जीए देखि दबो 100% आउ तार कोनोसी भी किछि भी देखिबा दरकार नै से आराम रे जे कोनोसी एग्जाम ओपीएससी भली एग्जाम रा मध्य तमर जोटा कोन प्रीलिम्स क्लियर मध्य आराम रे करि परिबो तो व्हाट इज 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तो हमें फास्ट डिस्कशन कले कोन गवर्नर थिले तीनटा जगह रे भलो रे बुझ गवर्नर वाज देयर एट 3 प्रेसिडेंसीज गोटे होची बॉम्बे गोटे होची मद्रास आउटे होची तमर का कलकत्ता तो ए जो कलकत्ता जोटा कि फोर्ट विलियम तार गवर्नर ए जो रेगुलेटिंग एक्ट रहले कोन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो very important question who appoints the governor general of bengal तो गवर्नर जनरल को किए सपोज मु गोटे कंपनी रे चाकरी कली मु गोटे मैनेजरियल पोस्ट रे चाकरी कली मु कंपनी रे हेड हबा को चाहूची तो मते अपॉइंटमेंट किए दबो मु थोड़ी ना जाय कि कंपनी रो हेड बस जीबी सो आई विल अपॉइंटेड बाय द कंपनी सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज अपॉइंटेड बाय माने रखिबो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC so maybe a question comes in your upcoming examination who was the first governor general of bengal so you will write Warren Hastings was the first governor general of bengal बुझिएला एतिकी पर्यंत बुझिएला ना बुझिएला जदी न बुझी पारला मते पचार जदी न बुझी पारला मते तमे पचारी परिबो very good to all of you तो हेला कोन ए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थिले प्लस 4 मेंबर्स को रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा अपॉइंटमेंट करा गला मन रख जीजीपी गवर्नर जनरल को की अपॉइंटमेंट कले आमे एबे कताले ईस्ट इंडिया कंपनी आ ये 4 मेंबर्स को की अपॉइंट करिवो ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 मेंबर्स मान को अपॉइंटमेंट कला तो ए जो 4 members को माने थिले for the first time it is important for your upcoming examination after that you need not to be remember these names ASO notification next year आसीबो मझिरे फालतू कथा पचारनी पाठ बुझी परछना ने को first one is Philip Francis the 4 members name are Philip Francis second is George Manson third is John Canry and the fourth one is Richard Barwell. So Governor General of Bengal plus 5 members. So total is equal to 5. Total 5 peoples are there. But there is a problem. When the 3 members come to India, they are not welcomed by Warren Hastings properly. So मेन प्रॉब्लम कौन हला जेहेतु गवर्नर जनरल से जो 4 जन मेंबर्स थिले किए दे आर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ताकू ठीक रे वेलकम कले नहीं तो से माने एग्नेस्ट हे गले कार वारेन हास्टिंग कर सो एटी हला प्रॉब्लम वारेन हास्टिंग को से बहुत भलो काम करथिले इफ वी विल टेक अंडर द कंसीडरेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बट तांकर कोन हला सेटा को
से ठीक भाव में तुले न पार्थिबारु एनिमी को क्रिएट कले सो what is the result? The three members of the parliament never supported Warren Hastings because Warren Hastings does not welcome them properly. जेमति हमर नेता मंत्री आसिले कोन होय नेता मंत्री मान को जदी हमें ठीक रे वेलकम न करिबा सीए हमर कोन मन ताकर जो चेला चामुंडा तांको से माने पचारिबेनी सो एटा होची तमर डिसीजन सो आई होप it will be clear to you. So third point कौन होला SC establishment of the Supreme Court. Supreme Court was established very important for the first time in 1774 at Calcutta. Why Supreme Court was established? Because the Britishers, the East India Company has never trusted on the judicial system of India. They think that they are outdated, they think that they are as not per the law. So these are the demerits. So age of Supreme Court established ହେଲା 1774 रे very important होची कोन only trial for Europeans सेटा केवल age of Supreme Court established ହେଲା only trial for Europeans. So European मानकर जदी किछि प्रॉब्लम हबो तो सेही जगह रे सी ए ट्रायल रे पार्टिसिपेट करि परिबे आ गोटे क्वेश्चन पड़े who was the first chief justice of Supreme Court? He was Justice Eliza Impey. So these are the important questions we had discussed in the 1773 Regulating Act. 5 members are there. One of them is Governor General of Bengal, who is appointed by the East India Company, plus 4 members. 4 members are appointed by the British Parliament. But from the 4 members, 3 members never supported Warren Hastings because they had not welcomed properly by the Warren Hastings when they come to India. So Warren Hastings faces a lots of problem. Warren Hastings faced a lot of problem after his after not his work till his tenure. हाँ आ गोटे इंपोर्टेंट वारेन हास्टिंग कर टेन्योर केते थिला 1773 रु 1785 गोटे क्वेश्चन तमर एग्जाम रे आसी थिला एलिजा इम्पे यस गोटे क्वेश्चन तमर एग्जाम रे आस्तला व्हाट इज द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो माने रखिबो देयर इज नो सच टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो के 10 वर्ष पई अछन के 10 मास पई मध्ये अछन. So it is a very important question. There is no fixed tenure for the Governor Generals of India. तो ये तो इंडिया रे नथले Governor General of Bengal थिले. So who are the 4 members? Philip Francis, George Manson, John Canry and the Richard Barwell. They are the very important question. And the another point is Supreme Court was established in 1774 at Calcutta only for the trials of the Europeans. Yes. एमसीक्यू डिस्कशन करिबा सो एई जो पॉइंट्स तमरा जहा लेखा निचे एटा पूरा भल्लरे पडिबो जेति कि मु बुझेइली सेइठू तमरा गोटे भी क्वेश्चन बाहर को आसी नहीं. सेकंड हो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी ऑफ वारेन हास्टिंग. एक्सपांसिस्ट कोन जेमति तमर चाइना करछि चाइना वर्तमान एक्सपेंशन करूछि निजर साम्राज्य को बढ़ेवा पई चेष्टा करूछि. तो एक्सपेंशन पॉलिसी द्वारा वारेन हास्टिंग फेस करथिले रोहिला वार, First Anglo-Maratha War, Second Anglo-Mysore War. Very important. So what is Rohilla War? Rohilla Khand was a small kingdom situated in between Oudh and the Marathas. Its ruler was Hafiz Rahmat Khan. तो से कौन गोटे डिफेंस ट्रीटी करथले 1772 रे विथ नवाब ऑफ औध जो अवध तमे कहछ औध तक को जाय fearing an attack of the Marathas. The Marathas ने बहुत शक्तिशाली थिले तो तांको डरिया पई गोटे डिफेंस ट्रीटी से साइन करथिले विथ द नवाब ऑफ औध बट नो सच अटैक टुक प्लेस बट द नवाब डिमांडेड मनी. किंतु मराठा माने किछि भी अटैक कलेनी और नवाब माने कहले कोन जेतु तमे हम संगे डिफेंस पॉलिसी को साइन करिछ यू हैव टू गिव अस मनी. जेमति एबे तमरा कोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जापान ऊपर चार्ज करूची हेवी अमाउंट्स फॉर इट्स सेफ्टी. तो जापान रो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 समस्त जानिचो जापान तार एग्रीमेंट साइन करिछि का संगे रे यूएसए संगे रे.
तार किछि मिलिटरी ग्रुप रहिबेनी ताको फुल प्रोटेक्शन दबो यूएसए बट से जो डिमांड तमर थिला एबे तार रे अधिका पैसा चार्ज करूची तो ये गला सेही बळे जिनस व्हेन रमत इन्वेड द नवाब विथ द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन्वेडेड रोहिलाखंड तो जेहेतु रहमत दवा को मना कले तो से माने कोन ब्रिटिशर्स मानक संगे मिसी की औद माने अटैक कर देले रॉयल खान को तो वारेन हास्टिंग हु सेंट ब्रिटिश ट्रूप्स अगेंस्ट द रोहिलाखंड जोटा तम रोहिलखंड जोटा सेटा को सिवियरली क्रिटिसाइज हेतला रोहिला अफेयर तो आमे कोन फास्ट जानले वारेन हास्टिंग को प्रॉपर्ली से माने सपोर्ट करू नथले तो 4 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो से माने एटा को बहुत क्रिटिसाइज करथले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ये बहुत क्रिटिसाइज रो शिकार हेतले फास्ट एंग्लो मराठा वार होची तमर कोन रिमेन सिंस द बैटल ऑफ पानीपत 1700 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेतला कोन जो हेतला तमर अब्दाली आ जो मराठा का भितरे तापर से माने कोन डिसयूनाइटेड हे हेतले तो एटा से पडिबो ट्रीटी ऑफ पुरंदर एटा म चाहुनी डिस्कशन करिया पे एटा तमे पढिले जानि परिबो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हैदर अली तो बा जीतिले तापर हैदर अली को कोन हैदर अली तांकर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख एटा टिके इंपोर्टेंट अछि तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार केबे हितला 1607 टू 1608 हैदर अली एकिया टीपू सुल्तान का बापा ये गोटे विक्ट्रियस थिले ये जीति थिले against the Britishers at the end of the war a defensive treaty was concluded between Hyder Ali and the British तो से माने कोन गोटे डिफेंस ट्रीटी साइन करथिले बट बिलाती जाति चतुर जाति आफ्टर 11 years the second Mysore war takes out the main cause of the second Anglo Mysore war was failed to fulfill the term when the defense treaty with the Hyder Ali when he was attacked by the Marathas in 1771 तो हैदर अली को जेतेबे मराठा माने अटैक कले सेतेबे ब्रिटिशर्स माने तांको किछि हेल्प कले नाही देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टाइल बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच अलाइज तो हैदर अली फ्रेंच मान को अलाइ करथिले तो सेइतु लागि तांकर मध्ये गोटे प्रॉब्लम हैला द ब्रिटिश कैप्चर माहे ए फ्रेंच सेटलमेंट विद इन हैदर टेरिटरी तो हैदर कर जो टेरिटरी थिला ता भितरे माहे बोली गोटे थिला फ्रेंच सेटलमेंट ताको मध्ये ब्रिटिशर्स माने अटैक कर देले तापरे हैदर अली गोटे ग्रेट अलायंस फॉर्म करले विथ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1770 तो एटा थिला तमरा मेन रीजंस से हैदर अली को अटैक करी थिले तो हमर सेकंड इंपोर्टेंट कोटा पीड्स इंडिया एक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पीड्स इंडिया एक्ट 1774 वेरी इंपोर्टेंट पीड्स इंडिया एक्ट 1774 तो आमर जो 1784 पीड्स इंडिया एक्ट 1784 रहितला हु वाज पीड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम सो आमे जो पूर्वरु डिस्कशन कले आमर जो रेगुलेटिंग एक्ट रखितले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +4 वर्तमान एटी कोन हैला फर्स्ट पॉइंट रे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +3 आंको किए अपॉइंटमेंट करिवो सेही ईस्ट इंडिया कंपनी A3 को किए करिवो ब्रिटिश पार्लियामेंट तो एई जो जगह रे 4 थिले 4 ता रिड्यूस हैला केते को 3 को व्हाई रिड्यूसेस टू 3 बिकॉज़ आमे जानले कोन सेही जो चार जण से मन वारेन हास्टिंग को प्रॉपर्ली हेल्प करू नथले सो ए क्वेश्चन में भी कम इन योर माइंड कि सर सेठी त 5 जण थिले 3/5 होची आपनकर मेजॉरिटी एटा पाइबा सहज ना और मेजॉरिटी एठी वर्तमान केते हे गेले 4 जण हे गेले 3/4 पाइबा सहज ऑब्वियसली 3/4 इज डिफिकल्ट बट एठी टिके कहानी रे ट्विस्ट रहला एई 3 जण का भितरु जदी जणे भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करिवे तागर जो वोटिंग रे त इक्वेशन हे जबा कोन 2:2 तो 2:2 टाइम रे ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गोटे कास्टिंग वोट रो गोटे सुविधा पाइबे कास्टिंग वोट तो कास्टिंग वोट कला पर कण ए जो 2:2 हे जो एडी +1 हे जो तो 3:2 हे जो तो 3:2 हे गेले मेजॉरिटी हबो कार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर सो इट हेल्प्स कण वारेन हास्टिंग अच्छा ए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल +3 मेंबर्स एमाने कोठी रहिबे एमाने रहउतले स्टे करतले कोठी इंडिया रे सेकेंड पॉइंट रे कोन हला पीड्स इंडिया एक्ट रे गोटे तमर हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल
board of control at England. A board of control एमाने कहा संगे deal कले, they have to deal only with company affair. So second point is a board of control was established at England. Their members are sitting inside the England and they have to interfere the company's affair. What is the third point? Parliament can recall any of the official including Governor General of Bengal. Very important. Governor General of Bengal was a wing of East India Company, but Parliament can recall any of the officials including Governor of India. So these are the 3 points. The 4 members has been reduced to 3, Governor General of Bengal plus 3, and the majority is now decreased to 3/4. But in case of 2:2, Governor of General of Bengal have a opportunity for the casting vote, and in this casting vote, if anyone is supporting to Governor General of Bengal, it will be considered as 3:2. And the second one is one board of control was established at England. Its members are residing at England, but they are the primary aim of them has to inform or to let the company's affair in India. Third one is now Parliament can recall any of the officials including Governor General of Bengal. ये समस्त को प्रणाम. So I think Pitt's India Company sorry Pitt's Act को तमे बुझी पाला. तो एठी तमर गोटे हेतला इम्पीचमेंट करा गला महाभियोग जोटा कि डोनाल्ड ट्रम्प को एग्नेस्ट मध्ये चलतला. इम्पीचमेंट कोन पई सेटा हेतला 22 चार्जेस हेतला. मोस्ट इंपोर्टेंट ला से जो रोहिला वार को जो सपोर्ट करथिले बिकॉज़ सी अवश्य कंपनी पई बेटर थिले वारेन हास्टिंग, कारण इंडिया रे माने से बहुत किछि माइंड खेले दिथिले. बट सेतेबेले से कहथले तमे काई इंडिया रे इंटरनल अफेयर रे जो मुंडो पुरोछ. तो मेन एम थिला कोन रोहिला वार पर तांकर जो एनिमी माने बहुत ये हितले कंप्लीटली एक्विटेड एंड दे रिसीव द पेंशन फ्रॉम द कंपनी टिल से 1818 जे मझले तो जे कंपनी ने पाइले इम्पीचमेंट तां करा हितला. तो एस्टिमेट ऑफ द गवर्नर जनरल strong will, great energy and the resourcefulness. His long stay in Bengal is the shadow of the Mughal cultural tradition gave him enough opportunity to learn Oriental languages such as Bengali, Persian. ए सब लैंग्वेज ऊपर मध्ये ताकर दक्षता थिला. तो डिफरेंट ऐसा एटा तमे टिके देखि दबो. सो एठी हमें कम पढिले कंपनीज जो रूल हैला एटा तमे